यौम जमहूरिया के मौके पर कारगुजार चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सुबजॉय पॉल ने रियासती हाई कोर्ट में कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। इस मौके पर उन्होंने जजेस, वकला और अमले से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर तक 72,000 से ज़ायद मामलात का तस्फिया किया जा चुका है, जिससे ज़ेर इल्तिवा मामलात की तादाद में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेंच और बार के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने आम आदमी के लिए कानूनी खिदमात को आसान बनाने के लिए किए गए कई हालिया इक़दाम की तफसीलात पेश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट कानूनी तालीम को फ़रोग़ देने, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और ज़ेर इल्तिवा मामलात को तेज़ करने के लिए मुतबादिल हल के तरीक़ेकार को फ़रोग़ देने के लिए काम करेगा। My esteemed brother and sister judges, Shri B. Narasimha Sharma, Learned Additional Solicitor General of India, Shri A. Sudarshan Reddy, Learned Advocate General and his team, Shri P. Nageshwar Rao, Learned Public Prosecutor, the representative of Telangana State Bar Council, Shri G. Praveen Kumar, Learned Deputy Solicitor General of India, Shri A. Ravindra Reddy, President Telangana High Court Bar Association, and other office bearers, Learned Senior Counsel, Registrar General and his team of registrars, Director State Judicial Academy, Member Secretary Telangana State Legal Services Authority, Secretary High Court Legal Services Committee, Law Secretary, Learned Advocates, Learned Judicial Officers and other staff members of the High Court, the security personnels, representatives of print and electronic media, and dear friends. At the outset, on my behalf and on everybody's behalf, I salute the martyrs, the freedom fighters and makers of the Constitution, because of which we are breathing today in free air. The preamble of Constitution shows that we, the people of India, adopted, enacted and gave to ourselves the Constitution. Thus, it is not only duty of lawmakers, law enforcers and law interpreters, but also the duty of every citizen to protect it, being keepers of the Constitution. Our Supreme Court and High Courts have known how to read the language of liberty in the Constitution and the statutes. They have upheld human rights, without which no free system can exist. The Constitution and judicial system work hand in hand to ensure that the nation remains democratic, just, and equitable society. The Constitution provides legal and philosophical foundation for the governance, whereas the judiciary ensures that these principles are actively upheld and defended. Collectively, they form the foundation of India's democracy and the legal structure. The effectiveness of judicial system is largely determined by how well it addressed the backlog and pending cases. Through collaboration between the bar and bench, I believe we can achieve remarkable progress in reduction of pendency.